differentiation. And in that chapter but differentiation, you can see the weightage of the chapter. This chapter number 3, it carries the weightage of 7 marks. 7 marks with option. And it is one of the most important chapter of Maths 1, differentiation. So ready? Write down today's date. Write down today's date. In that you write down the name of the chapter to be as differentiation. Write down the weightage. The chapter carries the weightage of 7 marks. Seven marks with option. 7 marks with option. चलो बच्चा लोग मुझे फटाफट ये बताओ the chapter beta which we are going to start with, what is the name of the chapter is? It is called to be as a differentiation. What is the name of the chapter is? Differentiation. बराबर है. अच्छा अब यहाँ पे जो मेरे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स है बेटा, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बराबर. अब यहाँ पे तो बड़ा उनको फायदा हो जाएगा, बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि उन्होंने सीए में भी बड़ा ये टॉपिक जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बराबर है. और मैंने लास्ट टाइम बड़ा लेक्चर में बताया भी था कि ये जो टॉपिक तुम लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, ये सेम टॉपिक तुम्हें एसवाईजेसी में भी पढ़ना है, बोला था मैंने ऐसा. ओके, तो चलो, इट इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन. इट इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन. तुम लोग का सबका रिवाइज भी होते रहेगा बेटा, एंड तुम्हारा जो कंसेप्ट है बेटा, तुम्हारा जो बेसिक फंडामेंटल है बेटा, वो भी यहाँ पे क्लियर होते जाएगा. ठीक है. So when we are going to start beta with this chapter which has been called to be as beta differentiation, तो यहाँ पे है ना बड़ा, we are not going to start directly with the term differentiation. We are not going to start directly beta with the term differentiation. First thing that we are going to study beta over here is so ready. The first thing beta,
which we are going to study over here is what is the meaning of the term derivative. What is the meaning of the term a derivative? Derivative. तो सब लोग बराबर यहाँ पे ध्यान से सुनना स्टार्ट करो. When we are going to talk about this term which has been called to be as a derivative, what is the meaning of the term a derivative? What is a derivative? So derivative is defined. Derivative is defined to be as a rate of change. Derivative is defined to be as the rate of change in a value of a one variable. It has been defined to be as the change in the value of a one variable with respect to the change in the value of a other variable. With respect to the change in the value of a other variable, it is been called to be as a derivative. It is been called to be as a derivative. इसका मतलब whenever we want to find the rate of change in the value of one variable with respect to the change in the value of other variable, so it is been called to be as a derivative. अच्छा तो immediately there will come a doubt asking the question as yes sir example. So example for that is let we assume a function. Let we assume a function let y is equal to f of x. Let we assume the function let y is equal to f of x. So in this given function we can see that there are two variables. There are two variables and that two variables are one is the variable x and other one is a variable y. One is the variable x and other one is a variable y. So when we are talking about the term variable, from the name itself, we come to know that the quantity whose values always keeps on changing, such type of quantities they are being called to be as a variable, है ना. ऐसे क्वांटिटीज जिसके वैल्यूज बार बार चेंज होते रहो, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल्स. एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स आर वन इज x, second one is y, and the third variable is z. One is x, second one is y, and the third one is z. So here we have considered the two variables and that two variables are a. One is a variable x and other one is a variable y. But out of this two variable x जो है बड़ा x, it is being called to be as independent variable. चलो फटाफट रिपीट करो बड़ा मेरे साथ साथ. What is x is called to be as a independent variable, whereas y जो है बड़ा y, it is being called to be as a dependent variable. What y is called to be as a dependent variable. So here ये जो बड़ा x है x is called to be as independent variable and y जो है बड़ा y, it is being called to be as dependent variable. बराबर.
So here when I'm using the word what okay, x is independent variable. What is x is a independent variable. तो बच्चा लोग what is the meaning of the word बड़ा independent variable means? बच्चा लोग independent variable means x is a variable. What is x is an variable बड़ा which can take any of the values which can take any of the values without any restrictions without any restrictions. That means x is a variable which can take the value positive or it can take the value negative or it can take the value 0, even it can take the value in terms of fraction but क्या y पढ़ाई के लिए अपने मर्जी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी बट का क्या साथ। y अपने मर्जी से बड़ा कोई भी वैल्यू ले पाएगा? Since y is a variable which is been expressed in the terms of x मैडम, तो कभी भी y जो है वो अपने मर्जी से बड़ा कोई भी वैल्यू ले नहीं पाएगा मैडम। y is a variable which will depend upon the values of x मैडम। whatever the values which are being taken by x whatever the values which are being taken by x correspondingly y will obtain its value समझ में आया सब लोग को y कभी भी अपने मर्जी से बड़ा कोई भी वैल्यू ले पाएगा नहीं। इसलिए बड़ा हम लोग y को कौन सा वेरिएबल कहेंगे? y इज अ बड़ा बिग टाइप ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। बराबर। अब मुझे बच्चा लोग फटाफट आंसर दो। बेटा x इज अ वेरिएबल, बराबर, जिसका जो नेचर है बेटा वो क्या है कि उसके वैल्यूज बेटा बार बार हमेशा क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। बराबर है। तो जैसे जैसे बेटा x के वैल्यूज चेंज होते रहेंगे बेटा करस्पॉन्डिंगली देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ, फटाफट मुझे बताओ बेटा, करस्पॉन्डिंगली बेटा देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि बेटा y का जो वैल्यू है वो चेंज क्यों हुआ? y का जो वैल्यू है बेटा वो चेंज क्यों हुआ मुझे बताओ। बिकॉज इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। बराबर है। या तो फिर वन कैन से दैट बिकॉज ऑफ द चेंज इन x, x चेंज हुआ इसीलिए बेटा कौन चेंज हुआ? y चेंज हुआ। बराबर। अगर x चेंज नहीं होता तो क्या बेटा y चेंज होता? इट इज बट ऑब्वियसली नो, है ना। इट इज बट ऑब्वियसली नो कि अगर x चेंज नहीं होता तो बेटा y भी चेंज नहीं होता। बट हियर देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y एंड दिस rate of change, I repeat बेटा, this rate of change in a value of y, in the value of y with respect to the change, with respect to the change in a value of x is called to be as a derivative। what it is called to be as a derivative। बराबर है। तो यहां पे you can start beta with the definition of derivative। Next time, by leaving the two finger space, write down
the rate of change the rate of change the rate of change in the value of a one variable, the rate of change in the value of a one variable with respect to the change with respect to the change in the value of other variable with respect to the change in the value of other variable is called to be as derivative is called to be as derivative बराबर है? ये तो हो गया बेटा द रेट ऑफ चेंज in the value of a one variable with respect to the change in the value of other variable, it is called to be as a derivative. But बच्चा लोग, what is the name of the chapter is? What is the name of the chapter is? Differentiation, right? तो बच्चा लोग अपने को पता होना चाहिए कि what is the meaning of the term बेटा differentiation. स्टार्टिंग में बेटा जो हम लोग ने पढ़ा वो तो सिर्फ बेटा हम लोग ने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा. बट सर द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बेटा डिफरेंशिएशन मीन? क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो यू कैन राइट डाउन बेटा नेक्स्ट टाइम बाय लिविंग द टू फिंगर्स प्लीज. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the process of finding a derivative the process of finding a derivative is called to be as a differentiation. तो इसका मतलब बेटा व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो बेटा फॉर फाइंडिंग दैट डेरिवेटिव व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या ये डेरिवेटिव जो है क्या वो हम लोग को बेटा डायरेक्टली मिलने वाला है? नो. फॉर फाइंडिंग दैट डेरिवेटिव वी आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ बेटा रूल्स. We are going to make the use of rules of differentiation. We are going to make the use of formulas for finding the derivative. So by using the rules, by using the formulas, when we are going to find a derivative, so that process of finding a derivative, it has been called to be as a differentiation. That process of finding a derivative, what it is called to be as a differentiation. चलो ये हो गया बड़ा. नेक्स्ट, अब दिमाग जो है बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा सोचता तो है कि सर हम लोग ने ये जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन, सर उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं बड़ा? व्हाट कैन बी द यूज? What can be the use of studying the chapter bada differentiation? So answer is bada very simple. Since bada you people, you belong to a commerce stream, right? What is the meaning of the term commerce means? Commerce का मतलब क्या होता है? Business. क्या होता है बेटा commerce का मतलब? Business. बराबर है? After completing with your studies, when you start with your own business, चल बेटा let we assume कि you are having your own manufacturing firm, you are having your own manufacturing company. तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ, being an entrepreneur, what should be your aim?
तुम्हारा जो मेन मोटो है बेटा, मेन मोटो वो क्या होना चाहिए मुझे बताओ। योर मेन मोटो बेटा, इट शुड बी टू अर्न द प्रॉफिट, राइट? बराबर है। देखा, सब लोग ने बड़ा यहाँ पे बनिया जैसी बात कर ली ना बेटा, मेरे साथ यहाँ पे रहते रहते बेटा। अब देख, तुम लोग भी सब लोग बड़ा बनिया हो गया, बनिया। तुम लोग को भी सब लोग को बड़ा प्रॉफिट दिखता है, सब फायदा दिखता है, फायदा। बराबर है कि नहीं? अच्छा, बट प्रॉफिट जो है बड़ा, प्रॉफिट इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? बड़ा प्रॉफिट इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्टिविटी, राइट? प्रोडक्टिविटी। अच्छा, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स इट इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन। तो तुम लोग को बड़ा पता होना चाहिए कि इन अ वन डे और इन अ वन वीक और इन अ वन मंथ और in a 1 year, my company should manufacture how many units of goods, बराबर है? So that the profit which is been earned, it should be maximized, बराबर है? तो बेटा ये आंसर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इन अ वन वीक और इन अ वन ईयर और इन अ वन डे और इन अ वन मंथ your company should manufacture how many units? So it is but obvious, बेटा, by studying the chapter differentiation. अच्छा, सेकंड बेटा, being an entrepreneur, बराबर है, तुम लोग हमेशा बेटा क्या चाहोगे कि तुम्हारे कंपनी के बनाए हुए जो गुड्स है बेटा, गुड्स, उसकी जो डिमांड है बेटा, वो मार्केट में हमेशा कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी हाई कि इट शुड बी लो? बराबर है, बराबर है, इट शुड बी हाई। बट जो डिमांड है बेटा, डिमांड, बराबर है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस के ऊपर, राइट? इट इज बेस्ड अपॉन द प्राइस, बिकॉज वी नो दैट के प्राइस एंड डिमांड, both of them, they are inversely proportional to each other. More will be the price, less will be the demand, less will be the price, more will be the demand. अच्छा, एकदम अगर बड़ा प्राइस हाई रखा तो तुम्हारे कंपनी के बनाए हुए गुड्स जो है बड़ा, वो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अच्छा, प्राइस अगर एकदम ही तुम लोग ने बड़ा कम रखा तो डेफिनेटली बड़ा कंपनी जो है, क्या वो अपने सारे खर्चे उठा पाएगी? नहीं, डेफिनेटली बड़ा द कंपनी विल हैव टू सफर द लॉस बड़ा। तो ऐसे केस में है ना, कंपनी जो है बड़ा, कंपनी वो प्राइस कैसा कोट करना है चाहिए बड़ा? प्राइस जो है बड़ा, वो हमेशा ये देखो बड़ा, ये देखो बड़ा, ऑप्टिमम बड़ा कोट होना चाहिए प्राइस। अच्छा, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड बड़ा ऑप्टिमम, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बड़ा ऑप्टिमम? मींस ऑप्टिमम का मतलब बड़ा ये एकदम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ये एकदम बड़ा कम भी नहीं होना चाहिए, बराबर है? इट हैज टू बी अ रीजनेबल, बराबर है कि नहीं? बट वो रीजनेबल प्राइस बड़ा क्या होगा, ये बात हम लोग को बड़ा कैसे पता चलेगी? हाउ वी विल कम टू नो दैट? सिंपल, बाय स्टडिंग द चैप्टर डिफरेंशिएशन बड़ा, बाय स्टडिंग द चैप्टर differentiation model, बराबर? Like that, there are many more uses of studying the chapter differentiation, which I will explain in the chapter number 4, which is called to be as application of derivatives, which is called to be as application of derivatives। समझ में आया तुम लोग को? मेरी आवाज आ रही है बच्चा लोग तुम लोग को? मेरे तरफ से तो बड़ा क्लियर है सब।